नमस्कार सभी को। डॉक्टर KK HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट में हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर्स का स्वागत है, और हमारे व्यूअर्स जो डॉक्टर KK अग्रवाल के यूट्यूब फेसबुक पेज से जुड़े हैं उनका सबका स्वागत है। और आज जो हम 2 अप्रैल 2023 को जो आज टॉपिक लिया हुआ है हमने, दिस इज रिलेटेड टू जो अभी IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई है मार्च में, उससे रिलेटेड है। टाइटल है IPCC रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज दिस मार्च 2023। दिस इज दी AR6 जो सिंथेसिस रिपोर्ट है उसके बेस पे है। उनकी क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं जस्ट एक बैकग्राउंड देते हुए उसके बाद हम सभी एक्सपर्ट मेंबर्स के व्यूज लेंगे इस पे। और इसमें मैं एक और कहना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर KK HCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया में हमारे एक्सपर्ट्स अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। इसमें अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, और बिकॉज हम लोग सभी काफ़ी कुछ लोग साइंटिफिक कम्युनिटी से भी हैं, अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। बट इसमें किसी का कोई ऐसा कोई कंट्राडिक्शन करने का किसी के व्यूज को नहीं है, और हर पर्सन अपने व्यू एक्सप्रेस करता है। और ये हमारा एक डिस्कशन राउंड टेबल में रहता है। कोई हमारा इसमें ये टोटल 100% साइंटिफिक क्लेम हम नहीं करते कि जो हमारे व्यूज हैं वही 100% साइंटिफिक हैं, और हम तो कोशिश करते हैं कि हम साइंटिफिक बेसिस पे डिस्कशन करें। तो इसी के साथ हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मार्च 2023 में अभी रिलीज हुई, दिस इज दी फ्रॉम दी इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इट गिव्स ए वेरी as per report, a very troubling picture that was in this report. As we all know that the climate change is impacting every corner of the world. हमने सभी देख रहे हैं, सबको रिपोर्ट्स है, न्यूज रिपोर्ट से, मीडिया से, सोशल मीडिया से। अभी आपका लेटेस्ट जो वेदर रिपोर्ट है, पैटर्न इंक्लूडिंग दी हैवी रेन्स इन दी particularly this northern part of India is like a very unusual kind of event which generally not observed in so past so many years, and is visible like looks like, but maybe different view. Much more severe impacts are score if we fail to reduce the greenhouse gas emissions and this decade as per the recommended limit. That was the what should be there. The latest report is one of the most comprehensive examination of the intensifying impact of climate change and future risk, particularly for resource poor countries and marginalized country. बहुत से ऐसे अभी भी country हैं, though India is we are a very developing economy, हम बहुत जा रहे हैं, but अभी there are so many countries though रिसोर्स पुअर हैं एंड मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके लिए दिस इज द वेरी ट्रबलिंग पिक्चर फॉर देम आल्सो. सो दे आर in summary, I just want to present there are 6 important lessons to learn from this report, or we take away that way. The impact of climate change are already more severe than expected. This is the first some point. Particularly the drought, extreme heat, record floods already threaten food security and livelihood of the millions of people. That we all know that. Today, half of the global population faces water insecurity. Wildfires are scoring larger area than ever before this many regions. Higher temperature are also enabling the spread of vector-borne diseases. So these are the first point, the impact of climate change, which is already more severe than we've seen that. Second point of the summary takeaway is we may face even more impact from climate change
in near future. The report says the IPCC estimate that in the next decade, climate change will drive 32 from 32 from 32 to 132 million people, more people into this extreme poverty. लिमिट से ऊपर है पर इसमें I think somebody can अगर म्यूट कर कुछ आवाज आ रही है कुछ कहीं से. Yeah. So this IPCC report जो है estimate that in next decade the climate change will drive from 32 to 132 million people, more people into this extreme poverty, because impact will be there, definitely losses will be there. Global warming will jeopardize the food security as well as increase in the incidence of heat-related mortality, heart diseases, and mental health challenges. We have also seeing that the these chances of the heart diseases are increasing, mental health illness is also increasing. So risk will escalate. This is third point. This risk will escalate quickly with higher temperature. The report states that every 10th of degree of additional warming will escalate threat to the people, species, and ecosystem. It will be impact will be every 10th of increase. This escalate the threat to the more for all the people, species, and ecosystem. Even the limiting the global warming to 1.5 degree, that is the global target in the Paris Agreement, is not safe for all. That was we have just always talking about 1.5 degree as per Paris Agreement. This is not safe for all. Even in 1.5 degree, the report, as per report, the summary they have given, the 1.5 degree limit to this increase, biodiversity loss will be 14%. Drought will impact 0.95 billion people. Food security costs for adaptation and residual damage to the major crops will be $63 billion. And there will be 45 to 58% increase in fires and 24% increase in the floods. If even in the 1.5 degree, we always talk about that. The fourth point of the summary that take away is the inequality, conflict, and development challenges will increase the vulnerability to the more climate change. We have seen all the conflict between the countries and also the various development challenges. We have seen even our neighbor countries also, that the food security and all. The fourth point is the adaptation is a very crucial point. More support must reach to the vulnerable people, जो भी हैं कहीं से भी जो उनको help vulnerable people. And sixth point is takeaway is the world needs urgent action now to address losses and damage. That was discussed in the last COP also. That. So these are some summary points. I just from the report I have just presented that, and मैं चाहूंगा कि ऐसे साहब से ही स्टार्ट करते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके इनके व्यूज हैं और इनके साहब के व्यूज एज पर एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस CPC वगैरह के रहे और बहुत ही क्रिटिकल व्यूज अपने जो मतलब फैक्चुअल अपने व्यूज अपने देते हैं. तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब जो है अपने व्यूज. ओवर टू साहब. सर अनम्यूट करेंगे? आई थिंक उनका अभी म्यूट है. आवाज आ रही मेरी? साहब आई थिंक उनको डॉक्टर साहब I will
आउट ऑफ सर्कुलेशन हो गए। अच्छा चलिए, तो मैं गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एस के गुप्ता जी, बहुत इनको भी करीब मोर देन 40 years एक्सपीरियंस इन द एयर पोल्यूशन एंड रिलेटेड थिंग्स है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्याम गुप्ता जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार, सबको नमस्कार। मेरा ये मानना है कि हम लोग ऐसी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि जो इरिवर्सिबल होती जा रही है। अभी क्लाइमेट चेंज जो है इट इज बिकमिंग इरिवर्सिबल नाउ, क्योंकि जो कुछ भी आदमी के एक्शंस होते जा रहे हैं वो रुकने वाले नहीं है। और ये जो डेवलपमेंट की जो रेस दौड़ रही है हमारी, और टेक्नोलॉजी को जिस तेजी से हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज तो अब हो ही गया, और ये ऐसा लगता है कि इरिवर्सिबल है, इसको रोकना शायद मुश्किल है। इट हैज हैपेंड नाउ। तो आवर ऑब्जेक्टिव शुड नाउ बी, इंस्टेड ऑफ keep on assessing the adverse impact of this climate change, what we should now focus on how to adopt to this new change in the environment or new change in the climate. और जो अब नई सिचुएशंस हमारे सामने आ गई हैं, उसमें लाइफस्टाइल कैसे बदले जाएं, क्रॉप्स के पैटर्न कैसे बदले जाएं, और अपनी एक्टिविटीज को किस तरह से अडॉप्ट किया जाए। आई थिंक इसके ऊपर कोई डिबेट या डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यही हर बार यही हार्प करते रहें कि ये तो बहुत नुकसान हो रहा है, इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, और उसमें ग्रीन हाउस गैस को रोका जाए, वो रुकेंगे है नहीं। हम अननेसेसरली अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे इनको डिस्कस करने में। तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिवली सोच के ये देखना चाहिए कि अब इस नए चेंज्ड एनवायरनमेंट में हमें अपनी लाइफ को किस तरह से अडॉप्ट करना चाहिए, क्या चेंज लाएं अपनी लाइफ में कि हम वी आर एबल टू लिव हैप्पीली एज वी वर लिविंग अर्लियर इन द ओल्डर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये मुझे लगता है कि एक नया थॉट प्रोसेस हमको अडॉप्ट करना चाहिए कि कुछ चीजें अब इरिवर्सिबल होती जा रही हैं, तो उसमें किस तरह से अब हम लोग अपने आप को अडॉप्ट करें, अपने लाइफ पैटर्न को कैसे अडॉप्ट करें, अपनी एक्टिविटीज को किस तरह से डालें, क्या अपने डेवलपमेंट के जो हमारे पैटर्न है उनको सुधारें या उसको किस तरह से अडॉप्ट करें। आई थिंक डिस्कशन शुड बी मोर फोकस्ड ऑन दैट rather than keep on discussing adverse impact and उनकी कैलकुलेशन करते रहे कितना लॉस हो गया, इतना नुकसान हो गया। ये मेरा सब विचार है इस बारे में सब। जी गुप्ता जी, अभी हमने 2 मीटिंग में जो लाइफ पे डिस्कस किया था, दैट इज दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है LIFE, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसी में बेसिकली जो हमारी जो लाइफ स्टाइल, जो इंडियन लाइफ स्टाइल के, और उसमें जो 75 पॉइंट्स है वो हमने डिटेल में 2 मीटिंग में डिस्कस किए, और उसमें हमने जो अडॉप्ट किया सकता, आई थिंक वर्ल्ड ऑल्सो नीड टू ऐसा कि इंडिया अगर करता है या पर्टिकुलरली कुछ कंट्री करते हैं, तो ये आई थिंक कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑल दिस इज ऑल साइंटिफिक रिपोर्ट और कि 100% ये कोई मतलब है, उन्होंने वेरी एक्सपर्ट इसमें हैं इसमें, और हमको भी पूरा झुठला नहीं सकते कि ये मतलब रिपोर्ट में है, और ये दिख भी रहा है, विजिबल इम्पैक्ट भी दिख रहा है। तो हमें बेसिकली अब एक्शन जो है अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन दोनों पे ही फोकस करने की जरूरत है। जैसा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंडा होता है कि हमें फोकस शुड बी मोर, और जो क्लाइमेट चेंज का है कि मोर ऑन दी एडॉप्टेशन साइड ऑल्सो, कि हमें जो चेंज है उसके एडॉप्टेशन में कैसे जाए, और इफ ऐसा होता है तो मिटिगेशन पे उस पे हम किस तरह जाएं दोनों। जी गुप्ता, बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू गुप्ता जी। सो नाउ आई रिक्वेस्ट संजीव कुमार जी, ही इज सीनियर हेड ऑफ द रिसर्च जो है लिमिटेड, और रैमकी ग्रुप से हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजीव कुमार जी से। ओवर टू संजीव कुमार जी। सर नमस्कार, and नमस्कार। very good afternoon to all the members present.
here. I think the topic is very relevant, and as explained by you and further voiced by Dr. Shyam Gupta sir, that rather than talking about the issues, we know we are already as a part of the issue, either as a generator or as a person who is getting affected. So it is more of adaptability, and if you see, this report generally gets published every 7th year since 1956, and the findings get since it has been published just a week back or just few days back, and they will likely to get discussed between the COP28 nations under the Paris and Kyoto Protocol Agreement. We should be very specific, integrating all our schemes going on or all our efforts going on to put forth as to how do we at least focus on 2-3 sectors which affects India as a whole. One such effect which has been talked of, using of renewable energy and going away with reduction of fossil fuel consumption. Whether the going away of fossil fuel consumption will be okay or not, but then the target should be the usage of fossil fuel to meet the demands of the ongoing requirements, either due to the population growth or to the economic development, how that dependency on the fossil fuel is reduced. And obviously there are many such sources of renewable energy which can be considered as a part of thermal substitution rate of the so much of dependency on the fossil fuel. And with that, if we look into the kind of distribution of the fossil resource to generate fuel at a place where it is not available, where it can be substituted with a lot of material which are there in terms of waste, can be one such sector preparing a action plan with detailed mapping of all the resources and the requirement in terms of where these requirements can be used, like very individual boilers being using for are dependent upon certain fossil fuel. Can those boilers be converted to meet the substitution requirement, either in the form of waste or in the form of harnessing of solar energy or in the form of any other material which is locally available? Can this be a part of a contribution as a part of how India on a self-dependent can put forth that this is my contribution and this is how it can be looked into? It's such a vast country and vast distribution of resource and vast transmission, vast availability of requirement in terms of the fuel or the energy. Can those be one such sector? And the contribution thereby estimated by scientists present on this forum, as well as many people who can be looked into, that how everything can be quantified. It is very important that anything which needs to be quantified and measured is to be looked as a part that yes, this can be scientifically proven, and that needs to be accepted by the international forum. So this is one very specific thing required in terms of how we can
be one such contributor, very small minuscule contributor, but since we are present in large number and our country is very vast, even a small number can really be a small contribution can really be contribute to a very large number where things can be worked upon and can be projected. Second thing which I would just request to look into is that, yes, we are so much dependent upon either on the Kharif crop or in the Rabi crops across the country. With the International Year of UN being declared as Year of Millets, can our dependency, if we look into the large urban population and the population very poor on that, very large urban population, though they being having the knowledge of what the roughage is, how the fiber is, they are moving at least 1 meal out of 3 meals onto such kinds of projects which are fibrous and which are roughage based. And many of us are taking millets or ragi or jawar or any other, even Rajasthan and Gujarat, they to always take thepla, which is made not of wheat. So probably probably that is one such crop where we can think of how it can be part of this kind of adaptability to the climatic change. And people should know, people do not even know that whether the soil or the clay or can be used to grow that kind of crops. So those kinds of guidance or those kinds of, again, a mathematical model needs to be looked into, that which under such unforeseen heavy downpours, whether it is in the month of March, February, which across the country has seen this kinds of heavy downpours, uneven, unprojected, which has affected the crops. And can those kinds of initiatives, especially to grow the roughage crops, be a contributor to a climate change? And thirdly, not the least one, awareness is most important part. We do talk of adaptability, but if we talk of Darwin's theory of survival of the fittest, I think human beings are one of the resource which is overall getting adaptable. But then, is our children going to how to adapt to such circumstance? Because our children only knows how to switch on the lights, and if the light is not there, they become so impatient. If the network is not there, if the lifts do not work. So adaptability does not means only upon the climate. Adaptability also means to such kinds of circumstances which is getting affected because of such high dependency on the technology, and those technologies are now going to get impacted because of the change in the climate change. So that kind of awareness to the children, to the education, to the people needs to be there. Maybe some part of it is getting enumerated in the life document which is coming up from the ministry. I was going through one of the document. There are so many things. It is actually getting over flooded. But that is also one important thing, is that with so much of technology and so much of material, what to do, what not to do, whether there has to be standardized systems or across all the research institutions or across any other advocacy group which is preparing such documents. It has to be common that the first quarter of the next financial year should only focus on this, and that should get repeated. Otherwise,
everybody prepares something and gets a beautiful material come out, and it is not getting focused to get outcome based result. These are the three major points, sir, I would just like to put up on. We can discuss further. There are so many things which each one of us can speak about, but these are my inputs as how it can be taken forward. Thank you, sir. Thank you, Sanjeev ji, for very excellent, very wide views that you have covered. These so many things. What should be our children's adaptability, not only for the climate change, but other they are very habitual to do gadgets and the kind of technology things like. So we have to see. I mean, and life, the program of government of India, definitely the ministry is doing so many things, and it will result, I think, in coming financial year. Thank you, Sanjeev ji. Well day. So now I request Vivek Kumar ji, our trustee, to HCFI. अब बहुत दिनों से बीच में वो बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री. बहुत दिन से उनको हमने हमारे और एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे बहुत अच्छी उनके व्यूज, और काफ़ी HCFI को बहुत सपोर्ट करते हैं. और मेरे लिए तो वो, मैं उनके मार्गदर्शन में काम करता हूँ और हमेशा हमें इनकरेज करते रहते हैं. So I will listen to Vivek Kumar ji. Along with नमस्कार to everyone. अरे विवेक जी नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अच्छा, आप यूरोप का पद बोलिए. How much they have adapted to climate change? What they are doing? I was mostly in Finland, and I must say I was there during the winter time. So, but there is one thing, they have put up a lot of windmills. Yes. Yeah. And of course, they have become very conscious towards plastic. Plastic is one thing they are taking very good care. But दूसरा क्या है कि Finland is very sparsely populated. Now comparing India to Finland may not be a very good idea because the amount of population जो Finland में है और जो इंडिया में उसमें बहुत फर्क है. So I would say कि जैसे जो India has to follow their own path, and we have to do things according to what India is all about. और उसमें हमको लगता है कि इंडिया में अब आप देखिए बॉम्बे, which is next to the seaside, we never thought कि it will get so much of air pollution as it is getting right now. So it is also a point of concern, because if a city like Bombay, which is on the sea front, and हम लोग बोलते हैं कि sea की हवा से air pollution कम हो जाएगा, अब नहीं होता है. And yes, I've been advocating this, and I'm trying to more and more, whatever it is, we have to make the change. First, we have to make the change in ourselves. So जैसे संजीव जी ने बोला था, he very correctly put, we have to start eating more and more food and grains made out of millets. Maybe many people may not like it, but like myself, till about 6 years back, I used to consume non-veg, but now I become pure vegetarian, and now I become even vegan, because I feel that in time to come, this is one way that we can impact the environment by consuming less non-veg and becoming more towards vegan. So there are things which we can first do ourselves, and then we can start walking the talk.
But as many scientists are saying that now the impact of the environment is irreversible. So the only thing we can do is plant more and more trees, and rather than using vehicle, we should be walking more. ये सब चीजें हम लोग को सब मालूम है. अब इसको हम लोग को अडॉप्ट करके अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा, because there is no second solution. So this is all what I would like to say, and of course, you people all scientists and more well read and more having the current situation knowledge. So I will leave it to you to take this forward. Thank you. Thank you, Vivek ji. Thank you for always encouraging the this HCFI and with your direction, particularly the field of environment. We are trying to, with the help of our expert members, to awareness and on the different area of the environment and climate change. So thank you, Vivek ji. Now I'll request शाह साहब, because उस समय I think उनका म्यूट थे, so मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाह साहब से कि अनम्यूट करके एंड अपने व्यूज एक्सप्रेस करें. ओवर टू डॉक्टर साहब. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. देखिए, वेदर का कंपोनेंट्स is expressed by the components of the climate. Now, why it is getting changed, that is a different issue. But change is inevitable. Over the years, we kept on changing. And Earth is, we are living in the modern age. And this is full of anthropogenic activities. There is no denial to that. We moved very fast, at least last 50 years or so. So all the anthropogenic components are staggering into our environment. There is no confusion, there is no doubt. We ran for the energy, we ran for the comfort, because we wanted more comfort, easiness to life, and we have not paid any attention to our materials, the components of the earth. As a result, whatever it as a climate change, but climate change, whether it is a climate change or weather change or the environmental component change, there is a, to me, this is a question mark there. Because we have exploited our environment, the components of the earth are meant, they are complement to each other, they make a balance to each other. And if those components are getting lost, their activity is getting retarded. As a result, the erratic behavior of the season, we call it climate change. Now the problem is with us, we know it. Sanjeev has rightly pointed out, I was about to say this, 1956, we got the first alarm
change. Food pattern is going to change. The disease patterns will be there. There will be anthropogenic activities, use activities. But how much we adapted and how much we have changed. Now we are talking about the life. Don't take it otherwise. I'm not criticizing any person. We know from the Veda also we are trying to pay attention for our energy. We are trying to pay attention to our materials, on water bodies, and but we have not cared. Vedas is so much old. And everything, whatever is a lifestyle is concerned, everything is depicted there. We know it, but we are focusing on this as if we are in the new earth. We have never behaved like a live educated person. We are never considered it as a hello. Am I audible? Yes, yes. Please go ahead. Very well, sir. Very well. So now the thing is that understanding very well everything from our Upanishad, from our Vedas, from our Ramayana, from our Mahabharata, from our Gitas, we have not really paid any attention by any person. Just let us look into our own, how much energy conservation or energy saved per day. Let us make a competition per day and say how much comfort we have sacrificed. We are not ready to compromise anything. We are not ready to sacrifice anything. And if we are talking about this is getting changed and making a panic in it has no people doing this. Whenever we joined our offices, I still remember 1988 when I joined CPCB. None of the offices were air conditions. None of the offices have the cell phone. None of the offices had the fax machines. None of the offices had the escalators. Then why when we have adapted everything, now we are not going to we cannot sacrifice all these things. So we wanted in the name of productivity, in the name of comfort, we have adapted all these things. Now it is very difficult. And in nowadays, particularly in the market, it is a production-oriented market, productivity-oriented market. If you don't buy, the markets will fall, the economics will go down. Now, if we are really not considering all these things into our life, we will keep on discussing all these things, and ultimately, it is going to make us an impact on our food, our health, our security, our future generation. Everything is going to lost. Let us talk at the ground. Let us talk at the ground, local, what we can do right now. Once the local environment is protected, once the water bodies are protected, once the waste is reduced, once the waste plants are in operation, when we are able to recycle everything, when we are able to change our food habits to the natural food habit, then only it is possible we can very well reach to local to global. From Modi ji's word,
local to global. This is the only fundamental aspect we can work. Wherever we are, everywhere we are not required to go to for fighting. We are not the fighters to the battlefield, but wherever we are there, whatever contribution we can make, that will be useful for us. Thank you very much. Thank you, sir. Very, very excellent views and the very, very practical to should be on ground level. Thank you so much. हमारे साथ जो है अमित जैन जी हैं और इनका वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित जैन जी से if you can on this if you can speak please. Yeah. Thank you, sir. Or in fact, just to give you a brief background, and Energy Conservation Building Code, Energy Conservation Act, काफी किया काम हम लोगों ने. अब now we are trying to in our effort, we are trying to promote you can say alternative system of energy, in which energy storage is one of the major area in which we are focusing, and we are mentoring a small startup, and which is providing solution by which it can reduce the power consumption from generators by 20 to 25% using the storage system, energy storage system. So this is a small effort that we are trying to do to curb the energy consumption as well as to promote energy efficiency. And accordingly, greenhouse gas emissions will be reduced. That's how we are trying to do. Second thing, along with this, we are also exploring the possibility of carbon credits. If it comes as a financial mechanism, how much? At first, we are trying to do it on self-sustaining basis, whatever energy intervention is there, and then intervention related to the carbon credits is also on the way. And that's how we are trying to promote this in not only in India but also in our neighboring countries. Thank you. Yeah, thank you. अभी सर स्टिल यूएनडीपी में हैं सर वहाँ पे आप अभी? नहीं सर, मेरा टेन्योर अब खत्म हो गया. So now yes, sir, okay. And that way there is more freedom to work on something which I like. जी, थैंक यू. आपके साथ तो बहुत बड़ा काफी लंबा एसोसिएशन रहा है, जैसे सो मेनी फील्ड वी वर्क हियर. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू सर, थैंक यू. सो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीना गुप्ता जी, इफ यू कैन स्पीक समथिंग अबाउट टुडेज सब्जेक्ट. हाँ जी, नमस्कार. मैं तो यही बोलूंगी, चलो क्लाइमेट चेंज हम कुदरत का वो है, हमने भी नेचर को बहुत अब्यूज किया है. अब नेचर की हमें अब्यूज कर रही है, तो हमें भी अभी जो पॉल्यूशन हम एनवायरनमेंट को करते हैं उसको अगर हम बचा सकेंगे तो शायद हम क्लाइमेट को भी बचा सकेंगे. थैंक यू. थैंक यू मैडम. मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो हैं लवकेश कुमार जी, और नॉर्मली लिखते भी बहुत हैं अच्छे, वो डिफरेंट सब्जेक्ट पे इंक्लूडिंग गवर्नेंस पे. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सब्जेक्ट पे उनके व्यूज क्या है.
नमस्कार सभी पैनल मेंबर्स को। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, एज अदर स्पीकर आल्सो सेड, इट्स नॉट इरिवर्सिबल, एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू। तो देखिए, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि मिलेट ईयर हमने डिक्लेयर किया, which is good, but at the same time, while adopting new things, we also need to do some kind of groundwork research at what we should do. For example, मिलेट की बात है, मिलेट का अभी एक देवेंद्र शर्मा जी हैं, काफी बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, एंड इज ए वेल नोन पर्सन. He said कि millet is only, and there is a medical report also on this, कि millet is not as a food, is recommended. It is only as a supplement. That is one. Number two is, what is the impact of changing the farming to millets? For example, because हम पानी की एक शॉर्टेज के लिए एक कहीं दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना करें. मैं उसको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ. सी देखिए, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हम लोग अमेरिका से अनाज मंगा रहे थे, तो हमने कहा भी हमें अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए. तो हमने कहा क्या किया, हमने उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे ये किया कि जो भी हमारे हो गया हरियाणा वाटर जो बहुत ज्यादा लेती है, उन क्रॉप्स को बोला. और ऐसी ही हम जो हमारी गवर्नमेंट की संस्थाएं थी, उन्होंने एक नई यील्ड लाई जो काफी पानी लेती. तो हमने सेल्फ सफिशिएंसी के लिए गेहूं को अडॉप्ट किया, उसके साथ चावल भी आया. हमने एमएसपी उन्हीं पे डाला, हमने मिलेट पे एमएसपी नहीं डाला. एक तरफ तो हम कंज्यूम भी वही कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट भी प्रमोट वही कर रही है, एमएसपी जिसको मिलेगा तो उसी वो प्रोडक्ट उगाएगा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमने पॉलिसी वाइज वी जस्ट गो फॉर एनीथिंग, एंड वी डोंट लुक एट. अब सपोज हम मिलेट उगाना शुरू कर देते हैं, मिलेट की पर एकड़ जो यील्ड है वो गेहूं, चावल और बाकी सबसे बहुत बहुत कम. तो व्हाट अबाउट अवर सेल्फ सफिशिएंसी ऑन फूड ग्रेन्स? Have anybody put attention to it, suggesting कि आप 3 में से 1 मील खा लीजिए या चेंज कीजिए? इसमें मिलेट में एक तरीके का एक एसिड होता है, मैं नाम भूल रहा हूं. दैट एसिड एक्चुअली इज काउंटर प्रोडक्टिव टू हेल्थ. दूसरी बात यह है कि जब हम पानी की बात करते हैं, हम कहते हैं साहब ग्राउंड लेवल नीचे हो गया. अब सपोज ये है कि लाइफ स्टाइल हमने पानी की ऐसी कर रखी है, जहां हम मैं हमेशा एक टिपिकल एग्जांपल साईनाथ का देता हूं, बॉम्बे का, जिसमें एक अपार्टमेंट में 200 स्विमिंग पूल थे, हर एक फ्लोर पे स्विमिंग पूल था. और बनाने वाले वो लोग थे जो किसान थे, जो पानी विदर्भ में खत्म हो गया, वो बॉम्बे में आके मजदूरी करने लगे. हम और भी बहुत सारी जगह पानी का, मतलब बियर की कंपनी को हम जो है 4 पैसे पर लीटर पे पानी दे रहे हैं, और वैसे पानी आपको पता ही है कितने का मिलता है. तो आइडिया ये है कि क्या हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे, या हम केवल किसान से कहते रहेंगे कि भाई तू इधर मिलेट पे चला जा, और या कंजम्पशन सोसाइटी से ये कहेंगे कि भी आप मिलेट पे शिफ्ट हो जाएंगे. एक दूसरा एग्जाम्पल मैं इसी की श्रृंखला में देना चाहूंगा, ऑटो इंडस्ट्री का. हम सभी लोग कह रहे हैं कि सब ईवी आप अडॉप्ट कीजिए. पहले दिल्ली में हमने कहा कि साहब सीएनजी अडॉप्ट कीजिए. अब सीएनजी में भी फ्यूल ऑयल के आसपास ही या उससे काफी कम हो सकता है, लेकिन काफी मात्रा में पोल्यूशन पैदा हो रहा है. लेकिन ईवी पे यदि हम ऑटो इंडस्ट्री को देखते हैं, तो ऑटो इंडस्ट्री तो अपने चेंज करना चाहती नहीं आराम से. वो तो अपना कंप्लायंस पूरी करा के निकल रहे हैं, क्योंकि उनकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, उनका पूरा जो सिस्टम है फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स पे ही है. Are we pushing them hard enough? तीसरा पॉइंट, क्या हमारी जो वाटर बॉडीज हैं, हमारे शाह साहब ने
और भी स्पीकर्स ने बोला कि वाटर बॉडीज, आर वी डूइंग एनफ टू रिवाइव अवर वाटर बॉडीज? आप देखिए, गार्डन सिटी, लेक सिटी बोला जाता था, गार्डन सिटी बोला जाता था, बेंगलोर की हालत आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट ने क्या कर दिया हमारा। हालांकि फॉर्चुनेटली दिल्ली में एक इनिशिएटिव चला हुआ है कि 60-70 झील की बातें हो रही हैं एंड वाटर लेवल बढ़ रहा है, देखिए इस इनिशिएटिव का क्या होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम केवल क्लाइमेट चेंज को एक एडॉक बेसिस पे एक कोई चीज, नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, विदाउट इवन लुकिंग एट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी, आई थिंक हमें उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटी हैं, हमें अपने कंजम्पशन के साथ साथ हमें उन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। यही मेरा सबमिशन। थैंक यू लोकेश कुमार जी, थैंक यू फॉर योर डाइवर्स व्यूज। नाउ आई रिक्वेस्ट नीरज त्यागी जी, और दोनों हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं, कवि भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीरज जी से ये अपने जो है इस पे आज पे सब्जेक्ट पे अपने व्यू एक्सप्रेस करना। जी नमस्कार, और सभी एक्सपर्ट्स विद्वानों को नमस्कार। ये जो AR6 रिपोर्ट है, दिस वाज बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ 270 experts from 67 countries. These experts were invited to take on their roles in the WG to contribution to the IPCC 6th assessment report. तो ये इनके एक वर्किंग ग्रुप भी बनाए गए थे, 3 वर्किंग ग्रुप थे। वर्किंग ग्रुप नंबर 1 में आपके जो फिजिक्स पर इनका सेंटर था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो भी क्लाइमेट चेंज है उसको ये अंडरलाइन करता है। और दूसरा जो वर्किंग ग्रुप था वो क्लाइमेट के जो इफेक्ट्स हैं, जो जलवायु परिवर्तन के लिए सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक प्रणाली को हमें अडॉप्ट करना है, उसके विकल्पों के लिए था, अल्टरनेटिव्स क्या है। और वर्किंग ग्रुप जो तीसरा था वो मिटिगेशन पे है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, उसके ऊपर है। तो ये जो IPCC की जो assessment report है, it aims to stress risk arising from the climate change, and these result from changes in climate related hazards such as droughts and floods, but also consider the exposure and vulnerability of the affected human or ecological system. As part of this assessment, the IPCC considers 5 broad categories of risk known as RFCs, reasons for concern, and how these risks progressively grow with climate change. जिसमें कि RFC 1 है कि unique and threatened systems, the potential for loss of or damage to a wide range of human systems or ecosystems that are unique or distinctive. RFC 2 है extreme weather events, जैसे risk to human health, livelihoods, or ecosystems from extreme weather like heat waves, flood, drought, or fires. Forest fires का इसमें है। RFC 3 जो है, that is distribution of impacts. This reflects how risks are distributed unevenly across regions and populations due to different distributions of hazards, exposure, and vulnerability. और जो चौथा हमारा फोकस पॉइंट है RFC 4, that is global aggregate impacts to socio-ecological systems that can be aggregated into a single global metric, such as financial loss, lives affected,
और स्पीसीज लॉस्ट, बहुत सारी स्पीसीज हमारी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। और जो पांचवा और आखिरी फोकस पॉइंट था वो है कि लार्ज स्केल सिंगुलर इवेंट्स, abrupt, drastic और irreversible changes in physical और ecological systems। लेकिन प्रश्न ये है, will this report change anything? This is the 6th IPCC report since the body was set up in 1988, with each comprehensive assessment taking roughly 6 to 8 years to compile. As the reports have grown in size and urgency, so have global greenhouse gas emissions also. In 2018, the IPCC warned that emissions must be halved by 2030 compared with 2010 levels to have a good chance of limiting temperature rises to 1.5 degrees centigrade only. Yet emissions continue to climb. Last year, they rose by a little under 1%. And according to International Energy Agency, that leaves a rapidly diminishing carbon budget for the world to stay within the IPCC's advised limits. अब इसमें हमें करना क्या है? What should governments do? सबसे पहली चीज है reduce emissions sharply and give up fossil fuels. ये जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो फॉसिल फ्यूल को, जो ऑयल की कंपनी है ब्राजील में या अमेरिका में, जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वो उसको नहीं होने दे रही। थ्रू इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो एंड अदर लो कार्बन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी, rethink agriculture, and restore forests and degraded natural landscapes. It may also be necessary to develop technologies that suck carbon dioxide from the air, called direct air capture, or explore other means of climate repair. The synthesis report is the culmination of the IPCC's 6th assessment cycle, which began in 2015. When adopting for AR6, it is useful to recall the AR5's key conclusions and identify which are the knowledge gaps at the time of assessment and to consider the emerging science since its publication. तो ये जो मुनाफाखोरी है, प्रॉफिट मेकिंग है, मैं तो कहता हूं दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन इम्प्लीमेंटिंग एनी रिपोर्ट। हम कितनी भी रिपोर्ट ले आए, उसको अगर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, लॉ एनफोर्समेंट नहीं हो पाएगा, और हम अपने बिहेवियर में एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन को नहीं लाएंगे, तब तक हम कुछ भी सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। और जिस तेजी से डिटेरियोरेशन हो रहा है, जैसा कि विजिबल है, ये रिपोर्ट्स भी कुछ नहीं कर पाएंगी। बस मेरा इतना सबमिशन था। जी जी, थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। आप तो बहुत काफी स्टडी करके आते हैं, वेरी गुड, आई मीन वेरी गुड एक्सप्रेस। अब हमारे पास वी हैव जस्ट 5 मिनट्स और हमारे गेस्ट हैं कुछ में, अगर कोई किसी के व्यूज हैं और अगर कुछ है। मैं तो नीरज जी का कविता सुनूंगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। चलिए नेक्स्ट में नीरज जी एक अच्छी कविता क्लाइमेट चेंज पे। नहीं, नीरज जी कविता क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक। जी जी अच्छा, मुझे कविता निकालनी पड़ेगी तो मैं सुना दूंगा, वैसे लिखी हुई है मैंने। दिखा दीजिए, अब हम लोग सुनेंगे आज। तो अभी कोई जिनको बोलना है वो बोल सकते हैं। जी जी, तो अगर हमारे कोई गेस्ट है, इनमें हमारे आज गेस्ट ज्वाइन किया है, कुछ लोग हैं और किसी के अपने व्यूज हैं, तो वो अनम्यूट करके, और वी हैव 3-4 मिनट्स, तो हम 1 o'clock करीब Sir, we have only emission reduction program
यही करना है, इसी में संकल्प लेना है जी और जी कुछ मत करिए। बिल्कुल 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 एंथ्रोपोजेनिक बर्डन घटाना है, नेचुरल कंपोनेंट्स को बढ़ावा देना है, बस इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल टेक्नोलॉजी, all technologies have side effect. We have to know it. Why this agricultural burning is going on, everything we know. इसीलिए अपने अपने स्थानों पर एमिशन कंट्रोल करिए, एमिशन को जितना रिड्यूस कर सकते हैं करिए, जितना कर सकते हैं अपने अपने आप में बी लेबोरियस as with the nature. So let's be supportive to our environment. लीजिए, मुझे कविता मिल गई है मेरी, मैं हाँ सुना चलिए देता हूँ। धीरज जी, बिल्कुल है बिल्कुल। मेरी कविता का टाइटल है कहाँ गया चांद, और ये एनवायरमेंट पे है। कहाँ है खग, कहाँ है मृग, कहाँ है खग, कहाँ है मृग, बस धुआं उगलती गाड़ियां, बड़े शहरों की जगमग, फूल भंवरे वो पर्वतों की श्रेणी, खो गई कहीं वो नदियों की कलकल, जहां सुंदरी गूंथती थी वेणी। देखो उधर वो आग का गोला, देखो उधर वो आग का गोला, जंगलों को निगलता बस छोटा सा शोला। कट रहे हैं जंगल, हो रहे हैं भूस्खलन, वृक्ष तो वृक्ष, पशु पक्षी भी हो रहे कम। आखिर कब तक बस यही क्रम, मशीनों की भयानक खटखट में खो गई वो लताओं की वाटिका। कहाँ वो पुष्प पल्लवित, जहां कोयल की थी कूक, मानो मयूरों से नृत्य में कहीं हो गई है चूक। मानो मयूरों से नृत्य में कहीं हो गई है चूक। देखो डालियों के झुंड में था बया का वो घोंसला, नोच ही डाला किसी ने, किसी शैतान सा था हौसला। जंगल जंगल धुएं के बादल, अब कहाँ खो गई वो शेर की मान, छुप गया वो आसमां, दिखा ना कब से हमारी दिल्ली में दादी माँ का चांद, दिखा ना कब से दादी माँ का चांद। थैंक यू। थैंक यू सो मच, वेरी एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। आप तो मतलब जो है पूरे अपने दिल के आई थिंक लोकेश जी का एक हैंड रेज किया है, वी वांट, कोई कहना चाह रहे हैं, देन वी फॉर दैट। लोकेश जी। नहीं सर, आपका हैंड रेज था। हाँ जी जी, चलिए कोई नहीं, आई थिंक वो हो गया आपका जो है। सो आज जो है हमने बहुत ही डाइवर्स व्यूज हमारे एक्सपर्ट्स मेंबर्स के सभी लोगों से जो अपने इस सब्जेक्ट में, और इसको अल्टीमेटली जो शाह साहब ने भी यही कहा कि हमें नेचर के प्रति अपने जब तक जो है बहुत एक ओनरशिप नहीं लगेगी कि हमारा अपना जो है ये प्लेनेट है और हम इस पे ग्राउंड में क्या कर सकते हैं, कैसे एमिशन रिडक्शंस करें, कैसे जो नेचुरल जो वे हमारा जो है कंजर्वेशन पे हम जो करते रहे वो करें। फिर वी हैव टू शिफ्ट जो है फ्रॉम कंजम्पशन टू कंजर्वेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही कॉन्सेप्ट है, जो लाइफ के प्रोग्राम्स में भी है। और जब तक हम चीज़ों को नहीं करें, कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत, अगर हम उसमें से 2% 5% करते भी हैं तब से कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। वी हैव टू गो मास, और जो मासिस में तभी ये पॉसिबल है, तभी हम जो चाहे ये रिपोर्ट्स जो आई हैं, रिपोर्ट्स तो हमें एक तरह से एक बताती हैं कि किस तरह से अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हम जो इसको इम्पैक्ट को रिड्यूस कर पाएंगे। और चाहे वो 1.5 डिग्री हो, या फिर अगर हम फर्दर नहीं गए 2 डिग्री का, 3 डिग्री का और इम्पैक्ट है 4 डिग्री तक भी, तो उसमें बहुत कुछ है। तो वो हम एक तरह से हमें ये रिपोर्ट इंडिकेट करती हैं कि ये एक मॉनिटरिंग है, लेकिन अल्टीमेटली मैनेजमेंट तो हमें करना है। मॉनिटरिंग तो हमें बता देगी कि मैनेजमेंट मॉनिटरिंग से ही हुआ,
मैनेजमेंट हमको करना है, हमका सबका कलेक्टिव एफर्ट्स है। और यही हमारे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर KK अग्रवाल का यही विजन था कि उनका सबकी हम मतलब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हम जो बात करते हैं, आज हमारे G20 में भी यही बात होती है। हम जो है वन प्लेनेट और जो बात करते हैं वन फैमिली, इस तरह से है। तो ये एक हमें कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। और डॉक्टर KK अग्रवाल जी ने पूरी लाइफ अपनी इसी में सोसाइटी के लिए, हेल्थ जो इन्वायरमेंट, दोनों को इंटीग्रेट करते हुए अपनी लाइफ लगाई। वही हमारे डॉक्टर KK SCFI का मिशन है कि हम अपने सारे एक्सपर्ट मेंबर्स के जो सहयोग से इस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मासेस तक अवेयरनेस जाए और उसका इम्पैक्ट हो, ट्रांसलेट टू एक्शन। जी शब्दों के साथ मैं आज की मीटिंग को